हेलो एवरीवन वेलकम करछि समस्तଙ୍କୁ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ସେशन को जोटा इंडियन पॉलिटी रो जति कि पीवाईक्यू सेशन ओके ओपीएससी आसुची अक्टोबर 12 रे समस्त प्रिपेयर तो किछि पिलांकर रिक्वेस्ट थिला इंडियन पॉलिटी को नै तो आज मु नै आछि पीवाईक्यू जति कि भी चलंतु देखिबे राइट टू वोट इज मेंशन्ड इन द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटिंग टू अच्छा ये पार्टी लिखा है जे नॉट पार्टी इट्स पार्ट सेकेंड ओके दैट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटिंग टू देखो रिलेटिंग टू फंडामेंटल राइट हबो कि हबोनी फंडामेंटल राइट हमरो 12 टू 35 कोठी भी आपण देखिचंती कि राइट टू वोट मेंशन हबारो नाही तो यूनियन लेजिस्लेचर हबोनी स्टेट लेजिस्लेचर हबोनी करेक्ट आंसर हे जिवो ऑप्शन डी इलेक्शन एरा केते नंबर आर्टिकल आर्टिकल 326 राइट टू वोट 326 एंड हमरो इलेक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जदि हम देखिबा लेटा केते नंबर पार्ट रे मेंशन दी पार्ट 15 okay and right to vote is a legal right जोटा कि granted by the representation of the people of the people act केते को year 1951 मने रहिला नेक्स्ट तो franchising कोन what is franchising not having to pay any fee a form of licensing operating a business without a license operating with less control so franchising is a form of licensing बिना लाइसेंस रे फ्रेंचाइजी हुए नहीं ओके जब हमें पॉलिटिकल टर्म्स रे देखिबा ताले फ्रेंचाइज माने कोन राइट टू वोट एंड जदि हमें बिजनेस टर्म्स रे देखिबा ताले फ्रेंचाइजिंग माने फॉर्म ऑफ लाइसेंसिंग लोकों को लाइसेंस प्रोवाइड करबा किछि बिजनेस स्टार्टअप पे ओके नेक्स्ट which state enjoy the distinction of being the first linguistic state of India first linguistic state कोडा हितला हमरो आंध्र प्रदेश आंसर तो मेंशन भी जाइए ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश केबे हितला 1953 रे ऑन द बेसिस ऑफ तेलुगु स्पीकिंग ऑन द बेसिस ऑफ तेलुगु स्पीकिंग पीपल ओके इटी गोटे बड़ ना सामना को आसे किए पोती श्री जामुल्लू ओके तांकर पास्ट ऑन टू डेथ करथिले से आ तापरे हमर आंध्र प्रदेश बाहर की आसिला आज कोन past state on the basis of linguistic language next अच्छा वेस्ट बंगाल केबे हितला ऑलरेडी से फॉर्म है कि थिला इटा तमिलनाडु 1956 परे हमरो ओके एंड जदि पंजाब देखिबा पंजाब केबे हला 1966 ओके मने रखिबा ईयर गुडा को इंपोर्टेंट Fabianism is closely related to close relate देखो fascism कोन it is completely opposite of Fabianism ହେଲା Fabianism जोटा कि हमरो डिक्टेटोरल आइडियोलॉजी आसे डिक्टेटोरल आइडियोलॉजी ऊपर बेस्ट ओके एंड साइंटिफिक सोशलिज्म हमरो मार्क्सिस्ट प्रिंसिपल डेमोक्रेटिक सोशलिज्म ताकू ही कुआ जाय हमरो फैबियानिज्म जोटा कि फैबियानिज्म हमरो फैबियन सोसाइटी अछि यूके रे जोटा हमरो ग्रेजुअल जो डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन अछि वर्ड सोशलिज्म ओके ताकू डिफाइन करे तो फैबियानिज्म is equal to option C democratic
or is closely related to democratic socialism. Liberalism तो आपण मानकु जणा थिबो, individual freedom. Okay, next, point out which of the following is not right enumerate in the Constitution of India but has been articulated by the Supreme Court to be a fundamental right. Okay, Supreme Court ताको fundamental right आख्या देइछि but it's not enumerated in the Constitution of India. Okay, equality before law, Article 14 तो अछि. Okay, and right to form association, 19 article number 19 1 रो C. तो एटा भी अछि. Abolition of untouchability, very obvious, article 17. बाकी रही गला कोटा right to privacy, हमर article 21, and option A is the correct answer. Okay, right to देखो right to privacy हमर का अंडर आछि, right to 21 जोटा sorry article 21 जोटा right to life and personal liberty. Okay, या अंडर रे आसुची ओ केस रेट आस्थिला लिबर्टी रो स्पेलिंग ओ केस रे आस्थिला हमर KS पुत्तस्वामी the Swami. Okay, but definitely mention in right articles DPSP बहुत बहुत important. ए दीटा चैप्टर तो निहाती important. Then parliament exam रे ए भितर questions तो थुआ तो देखी कि जिबा पे भूलिबेनी. Which countries enjoy a federal form of government? Federal form China रो कोन कि रे unitary ए unitary state USA यार federal. Okay, federal माने divides the power between division of power between state and union. Okay, Cuba unitary socialist इठी आंसर करेक्ट आंसर सहित अन्य जो ऑप्शन अछि सेगुडा भी किछि किछि इंपोर्टेंट तो देखंतु एंड मने रखंतु मध्य. बेल्जियम टा हमर एबे एबे फेडरल. ओके, तो करेक्ट आंसर हमर कोन हिजबो USA. The Constitution of India came into force. Constitution केबे आसिला into force? January 26, 1950. Adoption केबे हितला? Adoption in 26 November 1949. तो ए डेट रे हमरो अडॉप्ट करा हितला. एटा टिप्स कंफ्यूजन हुए किंतु क्लियरली मते कहि दोछ मने रखियो मध्य 26 नवेम्बर 1949 रे हमर अडॉप्ट हितला. एनफोर्समेंट हे नथिला. एनफोर्समेंट केबे हला 26 जनवरी 1950. 1 year, not exactly 1 year but 2 months पर से कोन हला अडॉप्ट हला. सॉरी एनफोर्स हला. तो 26 जनवरी 1950 रे एनफोर्समेंट हेछि and 26 November 1949 2 months पूर्व से अडॉप्ट हेतिला. ओके, and 15th August 1948 एटा तो जणा थिबो इंडिपेंडेंस डे. 1947 जदि हम एटा 1947 करिया ताले एटा इंडिपेंडेंस डे हबो. ओके, and ଆମର first general election केबे हितला 26 January 1952 first general election. ओके, जदि PDF दरकार काहाकु भी मते कमेंट सेक्शन रे लेखि कि जणांतु मु PDF टेलीग्राम रे आपको प्रोवाइड कर देबी. The Indian Constitution emphasizes not only a democratic government form of government but also a democratic society because it is infused with the spirit of justice, liberty, equality, fraternity. तो एठी करेक्ट आंसर कोन हे जिवो all the above. हमरो जस्टिस तो अछि, लिबर्टी अछि, इक्वालिटी अछि एंड फ्रैटर्निटी मध्य अछि. चारटा सारा प्रिंसिपल ऊपर ही रिलाई करछ हमर कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, हमरो प्रिएम्बल रे चारिटा प्रिंसिपल इंपोर्टेंटली अछि ensuring a democratic society.
केवल जे एक गवर्नमेंट नुह बट गोटे डेमोक्रेटिक सोसाइटी प्रोवाइड करिया पे ए चारटा प्रिंसिपल प्रिएम्बल रे मेंशन नेक्स्ट idea of federation was first proposed in Indian Council Act of 1842, Parliamentary Reform, Montagu-Chelmsford Reform, Nehru Report 1928. तो केबे फर्स्ट प्रपोज हेतिला नेहरू रिपोर्ट 1928 रे ହେଲା जोथे हमरो डोमिनियन स्टेटस आस्तिला डोमिनियन स्टेटस एंड फेडरल स्टेटस ओके ऑफ कोन विथ द प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट हमरो पार्लियामेंटरी रिफॉर्म 1909 जोटा सेथरे कोन हेतिला 1909 रे इटा आस्तिला एंड एथरे हमरो सेपरेट इलेक्टोरेट इंट्रोड्यूस हेतिला ना introduced and Montego Chelmsford টায়ার কি এটা কেবে আসছিলা 1919 রে हमरो टायर की इथरे इंट्रोड्यूस हेति मने रखियो सब पार्ट 14 ऑफ द पार्ट 4 of the constitution of India deals with which of the following part 3 fundamental right ହେଲା part 4 DPSP तो करेक्ट आंसर कोन हे जिवो part 4 DPSP ओके part 5 रे हमर आछे यूनियन लिखि दउची ठीक part 5 यूनियन तापर यूनियन पर कोन आसीबो स्टेट तो एटा हेसिबो part 6 एंड जदि एटा देखिबा हम part 3 हम जानि चंदी फंडामेंटल राइट part 4 ओके क्लियर नेक्स्ट which of the following country does not have a written constitution या भितरे काहरो नाही यूके रो written constitution नाही it has a unwritten constitution जोटी कि हमरो customs convictions judicial decisions status ए सब को नै कि गठित but it is unwritten ऑस्ट्रेलिया रो written constitution आ जदि हम देखिबा वर्ल्ड्स फर्स्ट written constitution कहारो यूएसए रो ओके यूएसए रो फर्स्ट written constitution केबे हेतिला केबे लिखा हेतिला 1787 ओके एंड बांग्लादेश रो देखिबा 1972 रे ताकर लिखा है काहे कि बिकॉज़ 1971 हमरो कोन इंडिया पाकिस्तान सॉरी बांग्लादेश एंड पाकिस्तान डिवाइड हैला ओके एंड सेपरेट हे गला बांग्लादेश पाकिस्तान थारु सेपरेट आगरु कोन थिला ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान एबे कंप्लीटली सेपरेटेड सेतमे से माने ताकर निजरो गवर्नमेंट बनेले निजरो कॉन्स्टिट्यूशन एंड written constitution the lengthiest constitution of the world is SI रे पड़थिला एटा ओके तो हमरो lengthiest constitution कारो very famously Indian Constitution is the lengthiest हमरो initially जदि देखिबा केतरा आर्टिकल रहउतला 395 articles okay and 22 parts ता सहित 8 schedule एबे 470 articles 12 schedules okay America ro very short that is only 7 articles okay British ro to ebe पढ़ी के आसले unwritten and French रो बहुत छोटा consent of people means consent of people a few people हबनी all people impractical जदि हमें देखिबा तो करेक्ट आंसर हे जिवो majority of people okay next provision of citizen in Indian Constitution became applicable in provision of citizenship केबे applicable हैला 1950 रे 1949 रे हमरो कोन हितला adopt हितला and 1950 रे हमरो enforce हैला तो enforce हेबा सहित सेटा applicable भी हे गला who among the following is not a member of any of the two houses of our country prime minister to member
finance minister भी member. President is not a member of any of the houses of a country, but is an integral part of कौन parliament. Okay, तो हमरो कहिथिली previous session रे हमरो parliament रो जदी देखिबा तीनटा important body कौन president and both houses of parliament जोटा लोक सभा and राज्य सभा. तो करेक्ट आंसर हे जिवो कोन डबल रब कर दिए. करेक्ट आंसर हे जिवो president. President is not a member of either Lok Sabha or Rajya Sabha, but is an integral part of parliament that comes under Article 79 Dutch. Okay, next. What is the exact constitutional position of Indian Republic when the constitution was brought into force with effect from 26th January 1950? Exact constitutional position of Indian Republic. कौन था? Democratic Republic, Sovereign Democratic Republic, Sovereign Secular Democratic Republic, or a Sovereign Secular Socialist Democratic Republic. कोउटा करेक्ट आंसर हिजो. सेते बेलकु हमरो a Sovereign Democratic Republic केवल थिला. ओके, Socialist Secular केबे आसिला? केबे आड ऑन हल? ए जो हमरो ए ऑप्शन डी रे जोटा अछि सेक्युलर एंड सोशलिस्ट ए दीटा वर्ड हमरो आड केबे हला म लिखि दोछि. Amendment 42 42nd constitutional amendment, okay, 1976 रे ए amendments कोडा जति के हमरो amendments जति के आर्टिकल सब इंपोर्टेंट. अच्छा, आर्टिकल तो हम सब माने रखि परिबानी किछि किछि इंपोर्टेंट आर्टिकल जोटा फंडामेंटल राइट जो पीएसपी पार्लियामेंट देन प्रेसिडेंट सिटीजनशिप किछि किछि आर्टिकल इलेक्शन हला रिसेंट इलेक्शन नै कि भी जाइछि तो इलेक्शन हला तो किछि किछिटा जोटा बहुत इंपोर्टेंट इलेक्शन तो नै कि एबे चर्चा भी थिला ना हमरो जो वोट राहुल गांधी कर वोट चोरी जो थिला हमरो इलेक्शन कमिशन ऊपर भी क्वेश्चन उठिथिला तो से नै कि इलेक्शन चैप्टर भी बहुत इंपोर्टेंट. ओके, तो एवडा निहाती देखिबो एठो ही क्वेश्चन आसीबो. ओके, हमें कोठथिले सेक्युलर एंड सोशलिस्ट तो एटा 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 रे हार्ड ऑन हला. ओके, नेक्स्ट. A federal structure for India was first put forward by Federal Structure by the Government of India Act 1935. Option C is the correct answer. ମୁଁ ଏବେ ଜଷ୍ଟ କହିକି ଆସିଲି 1909 ଆମର କଣ ମର୍ଲେମେଣ୍ଟୋ ରେ କଣ ଆସିଥିଲା ସେପାରେଟ ଇଲେକ୍ଟୋରେଟ୍ and 99 ଚେମ୍ସଫୋର୍ଡ. ओके, चेम्सफोर्ड एथिरे हमर कोन इंट्रोड्यूस हेतला डायरकी and 47 हमरो ग्रांटेड द इंडिपेंडेंस हमर अगस्त 15 1947 रे इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करंती. नेक्स्ट, व्हिच इज डिस्क्राइब्ड as the fourth state. तीनटा जणा अछि हमरो थर्ड जो फर्स्ट लेजिस्लेचर, सेकंड एग्जीक्यूटिव, थर्ड जुडिशियरी, फोर्थ इज द मीडिया. ऑलरेडी इठी चारटा सब मेंशन हे जाई छि. नंबरिंग कर दोछु फर्स्ट लेजिस्लेचर, सेकंड एग्जीक्यूटिव, हमरो थर्ड बॉडी इज जुडिशियरी, फोर्थ इज मीडिया. So correct answer is option B. Next, where is the constitutional power located enabling the central government to legislate on cow's letter? Cow's letter कहाँ अंडर आसुची को प्रिंसिपल अंडर आसुची गांधीयन प्रिंसिपल. ओके, तो गांधीयन प्रिंसिपल जदि आसुची ताले सेटा कहाँ अंडर रहउची हमरो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. करेक्ट आंसर हे जिवो ऑप्शन डी आर्टिकल 48 इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल. ओके, हमरो एंट्री 17 लिस्ट 3 and schedule 7 prevention of cruelty to animal सेटा हमरो माने रखिबा deals with the prevention of cruelty to animal. Okay, cow slaughter नुहा and এটা তো residuary power emergency power तो नुहा. ओके, तो माने रखिबा डीपीएसपी रो आर्टिकल 48 cow slaughter. देखो सी माने रखि दियो गोटे काउ चश्मा पिंची
ओके चश्मा 48 वाला चश्मा से मन रही काउस लेटर आर्टिकल 48 who was in the favor of the partyless democracy partyless democracy रो फेवर रे किए थिले आंको भितर भूपेंद्रनाथ दत्ता एमएन रॉय जयप्रकाश नारायण जवाहरलाल नेहरू कौन हम करेक्ट आंसर देखो ये जेतिकी भी अच्छे समस्ते पार्टी 4 रे थिले ओके पार्टीलेस डेमोक्रेसी फेवर रे किए थिले जयप्रकाश नेक्स्ट a national political party is one which received 4% of total votes polled in ओके तो गोटे नेशनल पॉलिटिकल पार्टी हमरो का कहै जो which received the 4% of total vote कोठी हमरो पोल्ड हेइथिबा दरकार two or more states that is not a states capital city 4 or more states or in all states तो करेक्ट आंसर कोन हिजिबो 4 or more states देखो आज पर हमर जदि इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया देखिबा तले गोटे पॉलिटिकल पार्टी इज रिकॉग्नाइज्ड एज ए नेशनल पार्टी जते बेले इट सिक्योर्स 6% of valid votes in 4 or more states and win 4टा लोकसभा सीट and it is 4% 6% 4टा लोकसभा सीट और satisfy other equivalent criteria जेमती कि हमरो 4% जोड़ा थिला ना हमरो प्रीवियसली थिला ओके तो रिवाइज कर नेबे नेक्स्ट the directive principle of state policy was adopted from who adopt hitla oh my god this section is also very important hela constitution ro ko part ko आना जाइतला से सब देखिबा चलंतु हमरो ब्रिटिश constitution कोन दिथिला parliamentary system and rule of law Switzerland constitution referendum and initiative ideas okay US constitution कोन दिथिला फंडामेंटल राइट एंड जुडिशियल रिव्यू मैक्सिमम देखिबो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन रे हमर जुडिशियरी नै कि जति कि भी अछि हला तो मैक्सिमम हमर यूएस कॉन्स्टिट्यूशन वास्ची तो करेक्ट आंसर हे जिवो डायरेक्टिव प्रिंसिपल हमर आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन वास्ची ओके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड 1937 एंड ये कोठो आनी स्पेनिश रो स्पेन रो स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन 1931 ओके नेक्स्ट which is not a constitutional body election commission finance commission UPSC planning commission okay so planning commission is not a constitutional body it is a aguru kon thila amar niti ayog thila na niti ayog 2020 2015 re jota then later amaro भूल कहि देली ठीक है गोटे सेकंड हमरो प्लानिंग कमिशन थिला इनिशियली आपको हमरो रिप्लेस के कला 2015 15 रे नीति आयोग रिप्लेस कला ओके चलो प्लानिंग कमिशन हमरो 1950 रे हितला ओके आ 2015 हमरो नीति आयोग ताको रिप्लेस कला नेक्स्ट यूपीएससी वो आर्टिकल राष्ट्रीय आर्टिकल 315 फाइनेंस कमिशन 280 ओके 280 टंका ते हिसाब रे मने रखियो इलेक्शन कमिशन 324 तो एटा समस्त माइंड रे रहिबा निहाती इलेक्शन कमिशन 324 फाइनेंस कमिशन 280 यूपीएससी 315 ओके एंड प्लानिंग कमिशन आगे थिला 1950 रे ताको रिप्लेस किया कला नीति आयोग 2015 रे where did the practice of shadow cabinet originate shadow cabinet कोठी हला ग्रेट ब्रिटेन यूके ओके हमरो वेस्टमिंस्टरियल मॉडल रे हमरो शैडो कैबिनेट रहउची तो शैडो कैबिनेट के फॉर्म करची पोजीशन पार्टी हमरो जे से टू मिरर द गवर्नमेंट जदि हम देखिबे ताहले द शैडो कैबिनेट फॉर्म करूची हमरो कैबिनेट रे
जो मिनिस्ट्रीज थिबो जो मिनिस्टर्स थिबे सेम शैडो कैबिनेट रे ये करिवो अपोजिशन पार्टी ओके एंड हमरो यूएसए रे तो जणा আছে प्रेसिडेंशियल सिस्टम ओके नेक्स्ट the preamble to our constitution makes no mention of justice fraternity equality of states मेंशन तो नाही एडल्ट फ्रांचाइज अच्छी जो इलेक्शन रे हमें जति देखिबा जस्टिस अच्छी फ्रैटर्निटी अच्छी ओके हमरो करेक्ट आंसर इजिबो इक्वालिटी ऑफ स्टेट्स नेक्स्ट a secular state is one which secular state काहा को आजिबो जोठी रिलीजन रो किछि बेसिस नथिबो ओके हैज नो रिलीजन ऑफ इट्स ओन सबु को नै किसे कोन treats all the religion equally हमरो एटा को आर्टिकल रे आसुची फंडामेंटल रो आर्टिकल नंबर 25 रो 28 okay next which system is independent india goes against the very basis of democracy which system is independent india goes against okay goes against party system की नहीं party system supports democracy जो थे हमरो representation देखा जाए ओके varieties of parties अछंती हमें आम हिसाब रे तांको voting और vote दियंती parliamentary system no caste system yes caste system against जाए ओके हमरो caste system untouchability ए सब कोडी आछे आर्टिकल राइट टू इक्वालिटी भी कास्ट सिस्टम अगेंस्ट है अनटचेबिलिटी भी कास्ट सिस्टम अगेंस्ट है जदि हमें देखिबा ताले आर्टिकल नंबर 16 डिस्क्रिमिनेशन ओके 17 बेसिकली 17 बट जदि हमें देखिबा कास्ट सिस्टम अगेंस्ट मैक्सिमम ऑफ हमरो कोन आछे आर्टिकल्स नेक्स्ट for which commission there is no provision of indian constitution election commission finance commission planning commission UPSC ओके तो प्लानिंग कमिशन एटी क्या ग्रुप पढ़ी के आसले नेक्स्ट बाकी सब गुडा देखो ये बाकी सब गुडा हमर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज ओनली प्लानिंग कमिशन इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नेक्स्ट शैडो कैबिनेट ब्रिटेन नेक्स्ट हाउ लिबर्टी कैन बी लिमिटेड बाय रूल बाय लॉ बाय अथॉरिटी बाय इक्वालिटी करेक्ट आंसर इज बाय लॉ ओके हमरो लिबर्टी इज नॉट एब्सोल्यूट ता माने एनी टाइम इट कैन बी रिस्ट्रिक्टेड बाय लॉ आर्टिकल 19 2 ରୁ 6 जब देखिबा ओके याकू जदि हमरो नेशनल इमरजेंसी अछि कि सपोज इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक ऑर्डर हला मोरालिटी हला नेशनल सिक्योरिटी हला से केस रे रेस्ट्रिक्ट करा जाय पारे ओके नेक्स्ट the ideas of liberty equality fraternity was influenced the indian national movement was taken from american revolution russian chinese french revolution तो कोठ निया जायथिला liberty fraternity and equality correct answer is french revolution okay american ru पढ़ी के आसले बे judicial review हमरो then fundamental right okay and american revolution is inspired democracy and independence किंतु रशियन रे हमें सोशलिज्म देखिबा चाइनीज रे कम्युनिस्ट नेक्स्ट who appoints and dismisses the gazetted official of union government president of india okay appointment भी सही करिवे dismiss भी सही करिवे and prime minister कोन करंती एडवाइस करंती किंतु से डायरेक्टली अपॉइंट करंती नहीं prime minister council of minister headed prime minister aids and advises president of india okay under article 77 and 311 कौन करंती the president appoints and can remove the gazetted officer of rank group A and group B okay appoints and कौन remove next
Which of the following is not provided in the constitution? Question कौन repeat हे देछि ना कौन constitutional रे हमरो planning commission provide ହେଇନି बाकी तो सब provide ହେଇछि. Next, which is a bulwark of personal freedom? Personal freedom. अच्छा, mandamus, habeas corpus, quo warranto, certiorari. Certiorari माने pass करबा छि कोनसी orders of inferior courts. लिखि दउछि आगो pass orders of inferior courts. जदि गोटे लोअर कोर्ट किछि पास करथिबो, ओके, कोन कहबे ऑलरेडी जजमेंट दे साथिबो तो हायर कोर्ट ताको पास करि पारिबो. सेटा को अंडर सर्टियररी अंडर. को वारंट माने टू लीगल टू क्वेश्चन द लीगैलिटी ऑफ द ऑफिस हेड. ओके, जदि हम एना हॉस्पिटल जिबा सेठी डॉक्टर न थाई के नर्स सब काम करथिबो, ओके, नर्स कोटे ऑपरेशन करिवो, देन वी कैन क्वेश्चन कोन विथ को अथॉरिटी तुम ऑपरेशन कंडक्ट कलो, दैट इज कॉल्ड को वारंटो. माने तमरो सेई क्वालिटी की क्वालिफिकेशन नहीं से ऑफिस को हेल्ड करिबा, but you are holding that office or you are doing that work. Mandamus, compel public duty performance. The correct answer is habeas corpus, produce the body. माने रखियो बेटा, produce the body. कहा against it? এটা আমরা to release a person unlawfully detained. ओके, तो जदि गोटे स्ट्रॉन्ग माने इंडिविजुअल रो लिबर्टी ऊपर देखिबा ताले एटा हमर स्ट्रॉंगेस्ट safeguard option. Next, the basic structure of our constitution was proclaimed by the Supreme Court. Basic structure तो only and only केशवानंद भारती केस. गोलकनाथ केस रे हमर कोन हेतला? अच्छा, केशवानंद भारती केस 1973. ओके, या अंडर कोन आस्तिला 42nd constitutional amendment जोटे कि हमर मिनी constitution. ओके, मिनी constitution ताको कहा जाय. And सेथिरे कोन देथिला ना, the Supreme Court ruled that Parliament can amend the constitution but cannot alter its basic structure. Basic structure रे जेमति कि हमरा कोन आछे, secularism हला, democracy हला, federalism हला. ओके, आ किछ इंपोर्टेंट केस रो डिटेल्स टिके देखितेबा. गोलकनाथ केस हमरो केबे हितला 1967 and एठी कोन हितला, Parliament cannot amend the fundamental right. Cannot amend fundamental right. Minerva Mill case 1980. Okay. Gopalan case 1950. एटा थिला article 21 personal liberty related. Which of this is not included as a fundamental right in Indian Constitution? Indian Constitution रे कोटा हमरो as a fundamental right. Okay, free speech 19(1) रो ए तो एटा अछि right to equality before law 14. Constitutional remedies article 32. So right to equal wages and equal work एटा हमर कोटे आछि DPSP. Okay, DPSP तो fundamental के नंबर और DPSP को आर्टिकल एटा मते कमेंट सेक्शन रे लिखि कि जणाइबे. Who was the chairman of drafting committee? Drafting committee रो chairman के थिले B.R. Ambedkar. Okay, total 7 members थिले drafting committee रे. Okay, and हमरो राजेंद्र प्रसाद president of constitutional assembly थिले. Okay, objective resolution के देथिले Jawaharlal Nehru committee. Objective resolution. Who was the constitutional advisor to the Constituent Assembly of India? So constitutional advisor के थिले B.N. Rao, B.R. Ambedkar, Rajendra Prasad, K.M. Munshi. Correct answer is B.N. Rao. Option C is the correct answer. Okay.
Question number 39. The President of Union of India has same constitutional authority as. Correct answer कौन हबो? British monarch. Okay. President of India रो the same constitutional authority as British monarch. US President of USA रो हमरो कौन? Presidential system. And France रो हमरो dual executive अछंदी. Next. Who said a good citizen makes a good state and a bad citizen makes a bad state? এটা Aristotle କରିଥିଲା. Okay. Next. The drafting of the constitution was completed on. Drafting केबे सरीथिला? 26th November 1949. जोटा हमर adoption होइथिला. Okay. Judicial review in the Indian Constitution is based on procedure established by law. Option C. And rule of law amar কোড আসছে written rule. Due process of law US. Okay. जो rule of law sorry judicial review in the India judicial review हमरा ଆସିଥିଲା କୋଉଠୁ ପଢିକି ଆସିଥିଲେ US ରୁ sorry procedure established by law. Okay. এটা কোଉଠୁ আসছে Japanese constitution. Okay. Next. Question number 43. Which is the most effective means of executive control of administration? Most effective means. Financial administration, political direction, appointment and removal of top officials na subordinate legislature. So correct answer is option C. Appointment and removal of top officials. Okay. Next. A federal government is in the shape of federal government agreement between center and states. Next. Acha, federalism mane kon amar division of powers. Okay, so between center and state. So that is arising from an agreement or compact. So this is option C is correct answer. Command by center माने कहाँ पे किसी तो यारो meaning ही होना repeal from the state single party rule नहीं. Next. Anti-defection law is given in which schedule of Indian Constitution? Anti-defection law 10th schedule. And it a co-article sorry constitutional amendment 52. এটা মনে রাখিও anti-defection law. Okay. 1980. ଆମର ସେକେଣ୍ଡ ରେ କଣ ଅଛି ସେକେଣ୍ଡ ସ୍କେଡ୍ୟୁଲ ରେ salary of constitutional authorities. Third रे oath and affirmation. Fourth रे राज्य सभा allocation of seats to राज्य सभा. यार गोटे short trick अछि ना tears of old PM ସେଇଥିରୁ ମନେ ରଖିଦବ ଏଟା total ମନେ ରଖି. 47. The phrase equality before law used in Article 14 of the Indian Constitution has been borrowed from. Equality before law Britain ରୁ ଆସିଛି. Okay. Next. Who said the state exists because crime exists in society, otherwise there would be no state, no need of a state. এটা Herbert Spencer করা sentence. Okay. JS Mill liberty ଉପରେ କହିଥିଲେ. Okay. Liberty. Tocqueville democracy. And John Locke କାହା ଉପରେ କହିଥିଲେ? Natural rights. Okay. Next.
Which section of IT Act has been struck down by the Supreme Court of India as it violates the freedom of speech and expression? Section 66A. Okay. Section 66A कौन कौन जोटा हमर ऑनलाइन ऑफेंसिव मेसेज ताको क्रिमिनलाइज्ड कराइछ तो सेति पई सेक्शन 66A को अंडर द सेक्शन ऑफ आईटी एक्ट कौन करा जाइछि स्ट्रक डाउन बाय द सुप्रीम फ्रीडम ऑफ अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट एटा कौन वायलेट करछि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हेंस मने रखिबो 66A कोन offensive online message criminalization of offensive online message को एटा को केस अंडर रे श्रेया सिंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जोड़ा 2015 रे हमर हेतिला अच्छा बाकी सब टिके टिके कहि दउची 67 हमर ऑप्शन इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल ऑप्शन इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल 64 offenses other offenses हमर जति कि होची 65 tampering जति कि सपोज कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट हला कि किछि tampering जो केस राष्ट्र सेठी हमर 64 सेक्शन 64 नेक्स्ट what is the maximum limit of total membership of legislative council of state okay so correct answer is option D 1/3 of the total membership of legislative assembly of the state next which one of the following does not find the constitution of India acha does not find in constitution of India attorney general advocate general attorney general highest law of India union center advocate general state highest law body okay correct answer एटी कोन हेजिबो solicitor general okay election commission attorney general article 76 advocate general article 165 and state election commission article 243 k election commission 320 okay next in which of the following state the Indian Constitution is subject of population control and family planning population control and family planning आछे concurrent list okay हमर यूनियन लिस्ट जति कि सेंट्रल related subjects central subjects state only state matters and residuary जोटा जोटा कोनोसी भी लिस्ट टेंशन नथियो next question number 53 which of the following right was heart and soul of constitution by B.R. Ambedkar हमर कोटा constitutional remedy article number 32 बार बार कहूची मने रखिवा right to equality हमर article 14 freedom of religion article 25 property आसीजिबो हमर 44th amendment परे right to sorry एटा fundamental right to हटे की कोट रहइबो legal right रे okay and exploitation आसीजिबो हमर 23 and 24 next from which of the following countries has Indian Constitution borrowed the method of election of president कोट आछे Ireland okay so 54 हेजिबो correct answer D Australia रो हमर federal structure and concurrent list federal structure and concurrent list बार बार इरा पाखा पाखी 3-4टा क्वेश्चन यारी ऊपर आसलानी तो मैक्सिमम कवरेज तो हे गलानी अपन माने निहाती रखिबे जर्मनी रो हमर कोन आछि इमरजेंसी प्रोविजन ए गोटे जर्मनी रो आछि इमरजेंसी इट इज वाई एठी वाई तो वाई वाई रो माने रखिबे जर्मनी रो इमरजेंसी प्रोविजन
concurrent Australia RR. Okay, federal Australia and concurrent Australia. Canada ରୁ କଣ ଆସିଛି quasi federal. Okay, and USA ରେ ତ ଜଣା ଅଛି ଆମର electoral college ହେଲା, judicial review ହେଲା বা fundamental right ହେଲା US ରେ. Why did the Indian opt for federal form of government? Due to linguistic and regional diversity, religious diversity, vast territory, administrative convenience to ensure structural integration. ଯଦି ଦେଖିବା କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସବୁ ଟିକେ ଟିକେ କଣ ଆନ୍ସରେବଲ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ବଟ୍ ଆମେ ଯଦି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଦେଖିବା ତାହେଲେ କଣ ହେଇଯିବ? ଅପସନ A, due to linguistic and regional diversity. Okay. Next. Which of the following is borrowed feature of Indian Constitution is different from other four? Bicameral, cabinet, provision of state, single citizenship. Correct answer is provision of state. Provision of state କୋଉଠୁ ଆସିଛି? ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ଆକ୍ଟ 1935. ବାକି ସବୁ କୋଉଠୁ ଆସିଛି? ବ୍ରିଟେନ ରୁ. 1 2 3 4 ସବୁ ଆସିଛି ବ୍ରିଟେନ. Okay, next. Which of the following forms the writ? Which of the following form of writ literally means command? ଏଠିକି ଆଗରୁ ପଢିକି ଆସିଲେ mandamus କୁ command କୁହାଯାଏ. Certiorari is to be informed. or ଏଟା କୋଉଠି ୟୁଜ କରାଯାଏ? ଯଦି lower court ର କିଛି ବି order higher court quash କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ. And habeas corpus produce the body. Okay, ଆମର individual ର safety valve. Okay, and prohibition ଆମର prevent the lower court from exceeding jurisdiction. अच्छा, certiorari ରେ already से pass କରି ଦେଇଥିବ order. prohibition ରେ order pass କରିବା ଆଗରୁ prohibit higher court lower court prohibit କରିଦେବ. and co-warrant with what authority? କୋଉ authority ରେ ଏଟା କରୁଛ? Okay, prohibition prohibit କରିଦେବ. and ଆଉ କଣ ଥିଲା? certiorari already pass ହେଇଥିବା order को quash କରିବ. Okay, habeas corpus present the body. Next. The Indian Constitution recognized minorities on the basis of percentage of population and of the group to the total population. Okay, which is not a constitutional body. Again, it a bar can get repeat hochi planning commission. Which countries have an unwritten constitution? କୋଉ country ର? ଆମେ ପଢିଥିଲେ ଇଣ୍ଡିଆର lengthiest written constitution. Okay, USA ର short 7 article ର short written constitution. UK ର unwritten constitution. ପାକିସ୍ତାନ ର ବି written constitution କେବେ ହେଲା? 1973. Okay, 1972 ରେ ବାଂଲାଦେଶ ର ହେଲା, 1973 ରେ ପାକିସ୍ତାନ ର ହେଲା. Next. Public opinion ଆମର the opinion of majority, opinion of people of political matters, nahi, citizen of the country, and acha, the opinion based on reasoning which is the welfare of, which is for the welfare of the whole society. So correct answer कौन ହେଇଯିବ ମତେ କୁହନ୍ତୁ? It is just the କିଛିଟା slide back ଆମେ ପଢିକି ଆସିଲେ option A, opinion of majority is the correct answer. Okay, next. Which of the following is not guaranteed by Indian Constitution? Kuda equality is guaranteed. Right to free education for all. Right to free education for all. देखो हमरो 6 to 14 जाए जोड़ा education. Okay, सेटा fundamental right अछि. And then DPSP रे भी education नहीं की अछि, but free education for all एटा mention नहीं. Okay, हमरो right to देखो article 21A जोटा अछि guarantees free and compulsory
education to 6 to 14 years of students, but not for all. Right to equality re amaro 14 to 18 article number. Constitutional remedies, heart and soul of the constitution by B.R. Ambedkar, article number 32. Religious freedom is 25 to 28. Okay. DPSP was borrowed by the framers of the Indian Constitution from the Constitution. DPSP কোড আসছে Ireland কোড বানিয়েছে Spain ru. Okay. Option C. Which part of the Constitution deals with the directive principle of state policy? কোটা part 4. Part 3 ଆମର କଣ ରହୁଛି? Fundamental right. Part 1 union and its territory. Part 2 ରହୁଛି citizenship. Next. The method of democratic socialism are method of democratic socialism kona? Revolution, general strike, persuasion, propaganda, and sabotage. The right answer is democratic. Option D, persuasion and propaganda. Go. Next. 67. Democratic centralism is an important feature of communist society, democratic state, totalitarian state, or socialist state. Correct answer is communist state. Option A is the correct answer. What democratic to centralism or state? It's a kaharo principle. Concept of Lenin or Leninist political organization. Okay. Totalitarian means full control. Full without democracy. पूरा control बिना without कौन लिखिए internal democracy. Okay. Next. Which of the following feature of Indian Constitution has been borrowed from a country different from other four? The fundamental duties, fundamental right, preamble, fundamental duties are put as Ireland, right to US, preamble be US, Supreme Court, court, judiciary, सब court of US. Okay. And provision of state US trust. Correct answer कौन है जीवा? हमारा fundamental duties. Next. Which of the following act in India made a provision of bicameral legislature in India for the first time? Bicameral legislature, Government of India Act 1919. जोटा कि हमारा Montego Chelmsford reform or Montfort reform. Okay. हमारा 1935 कौन कला? Expanded the provincial autonomy. Okay. And consultative council बाकी सब हमारा 1909 ହେଲା 92 ହେଲା 61 ହେଲା. Okay. So last question. Again, certiorari, habeas corpus mandamus, prohibition and quo warranto. Individual definition ବୁଝେଇବା ସହିତ ମୁଁ କହିଦେଇଛି ନିହାତି ମନେ ରଖିବ ୟାର ଆମର କମାଣ୍ଡ ର କଣ mandamus. Okay. So complete ଆମର এই chapter ଟା 70 question रे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें कंप्लीट करदेले जेति के भी इंपोर्टेंट हमरो अमेंडमेंट्स हैला पार्ट्स हैला 5 टा पार्ट्स शेड्यूल हैला देन जो ईयर्स ऑफ ओल्ड पीएम देन हमरो पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को कंट्री टू कोटा बोरोड हेची इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फेडरलिज्म सेंटर स्टेट रिलेशनशिप देन हमरो कोन होची लिस्ट concurrent यूनियन स्टेट लिस्ट यार फास्ट 5 निहाती देखिकी जाइथिबे. ओके बहुत इंपोर्टेंट सेठू आसी भी जाए क्वेश्चंस आ एबे तो यूपीएससी फॉर्मेट रे पकोछि तो निहाती आसीबो. तो ए सबु जाको कंप्लीट हे गला.
वन टाइम एटा रिविजन करनेबे एंड नेक्स्ट वीडियो स्टेप लिस्ट। थैंक यू।